आज हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस देखेंगे। पहले इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे। ग्राम पॉजिटिव कोकई, नॉन स्पोरिंग स्ट्रेन्स, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन मोटाइल, ग्रैप लाइक clusters, facultative anaerobes, ovoid or spherical. Cluster formation is due to cell division occurring in three planes with daughter cells tending to remain in close proximity. अब कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। Aerobic and grows readily on simple media at optimum temperature 37 degrees Celsius and pH 7.4 to 7.6. Temperature range 10 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. अब फ्लूइड मीडिया पे देखेंगे कैसी ग्रोथ होती है। यूनिफॉर्म टर्बिडिटी, नो पिगमेंट इज प्रोड्यूस्ड। न्यूट्रेंट आगार पे after 24 hours incubation colonies is pigmented golden yellow 2 to 4 mm diameter, pinhead size, circular, convex, smooth, shiny, opaque with entire edge and emulsifies easily. Pigment production occurs optimally at 22 degrees Celsius and only in aerobic cultures. Pigment production is enhanced with 1% glycerol monoacetate or milk is incorporated in the medium. Blood agar पे देखेंगे। Avoid zone of beta hemolysis, clear zone होता है ये, is produced around colonies. Hemolysis is marked on rabbit or sheep blood and weak on horse blood agar. अब हम मैकेंकी मीडियम पे देखेंगे। टिनी लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज हमें शो होगी पिंक कलर की। सिलेक्टिव मीडिया हम इसमें यूज़ करते हैं। साल्ट अगार, रुटलॉन्स मीडियम, सिलेक्टिव प्लस डिफरेंशियल मीडियम हम इसमें यूज़ करते हैं। मैनिटॉल, साल्ट अगार। अब पैथोजेनिसिटी हम देखेंगे। स्टेफाइलोकोकस may cause the majority of acute pyogenic lesions in men. Staphylococcal lesions are characteristically localized. पहले हम देखेंगे cutaneous infections, उसमें आता है folliculitis, inflammation of the hair follicles, a small red bumps or pimples develop at infection sites of hair follicles. Folliculitis infecting one or more hair follicles on the edge of the upper or lower eyelid. अब देखेंगे boils, furuncle, deep-seated infection or originating from folliculitis. If infection extended from follicle to neighboring tissues, causes redness, swelling, severe pain, commonly found neck, armpits, and groin regions. Corbicules is an aggregation of infected furuncle. Corbicules may form large abscess. It is a large area of redness, swelling and pain, punctuated by several sites of drainage. पस ठीक। Impetigo देखेंगे a very superficial skin infection common in children, usually produce blisters or sores on the face, neck, hands and diaper areas. It is characterized by watery bristles which become pustules and then honey-colored crusts. Impetigo with vesicles, pustules and sharply demarcated regions of honey-colored crusts. वाउंड इन्फेक्शंस होते हैं और क्यूटेनियस इन्फेक्शंस में और वाउंड इन्फेक्शंस आता है। अब देखेंगे हम डीप इन्फेक्शंस, ऑस्टियोमिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन, बैक्टीरिया कैन गेट टू द बोन via bloodstream following an injury. Clinical features: pain, swelling, deformity, defective healing, in some cases pus flow. Diagnosis: X-ray, MRI और बोन एस्पिरेट्स। ठीक।
टाइटस देखेंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरियोस्टियम, क्लिनिकल फीचर्स इसके, फीवर, लोकलाइज्ड पेन, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक, डायग्नोसिस, नीडल एस्पिरेशन ऑफ सब पेरियोस्टियल फ्लूइड। एंडोकार्डिटिस देखेंगे, it is an inflammation of the inner layer of heart, the endocardium. Endocarditis occur when bacteria enter bloodstream, travel to heart and latch on abnormal heart valves and damaged heart tissue. अब देखेंगे एक्सफोलेटिव डिजीज, एक्सफोलेट scaling of tissue in layers, also known as staphylococcal skin scalded syndrome, previously called as dermatitis exfoliativa, pemphigus neonatorum, Lyell's disease, and Ritter's disease. Epidermal toxin produced by Staphylococcus aureus at skin and is carried by bloodstream to epidermis, where it causes a split in the inner cellular layers. That is, that this toxin separates outer layer of epidermis from underlying tissues. अब पैथोजेनिसिटी में और है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, caused when toxin shock syndrome, toxin liberated by Staphylococcus aureus enters bloodstream. It is a multiple system illness characterized by vomiting, diarrhea, skin rashes, kidney failure, high fever, headache, conjunctival reddening, hypotension. Staphylococcal food poisoning, caused when consuming food in which Staphylococcus aureus has multiplied and formed endotoxin. Symptoms: nausea, vomiting, severe abdominal cramps, diarrhea, sweating, headache, etc. Musculoskeletal infection, osteomyelitis, arthritis. Respiratory infection, tonsillitis, lung abscess, pharyngitis, sinusitis, bronchopneumonia, एम्फीमिया, CNS इन्फेक्शंस में आएगा ब्रेन एब्सेस, मेनिंजाइटिस। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखेंगे। स्पेसिमेन, द स्पेसिमेन्स टू बी कलेक्टेड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लेजन फ्रॉम द डिटेक्शन ऑफ कैरियर, nasal swab, axillary swab and perineal swabs are collected. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसको होगा उसमें स्पोटम हम स्पेसिमेन लेते हैं, पस लेते हैं, सुपरेटिव लेजन जिसको होंगे वोमेंट लेते हैं, फेसिस लेते हैं। ठीक, माइक्रोस्कोपी, ग्राम स्टेनर smears are useful in the case of pus where cocci in clusters may be seen. कल्चर देखेंगे, the specimen are plated on blood agar or selective medium like Luther's or salt milk agar or Robertson's cooked meat medium containing 10% sodium chloride. Smears from the clusters are examined and the coagulase test carried out when staphylococci are isolated. कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले ही देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन coagulase टेस्ट, ट्यूब और स्लाइड मेथड। बायोकेमिकल रिएक्शंस देखेंगे, कैटालिस पॉजिटिव, coagulase पॉजिटिव, इंडोल पॉजिटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव।